Hi, good morning. I'm Preeti Lahoti and today we will see about an nucleophilic substitution reaction. But to going to the topic, I will introduce myself. I'm Preeti Lahoti. I have completed my MSc in 2015 and I have completed my BEd currently in 2020 and I have 4 years of teaching experience and I give an real life examples from my experience to know about an reaction in very well and to understand the students. Then we are going to our topic, that is a nucleophilic substitution reaction. Then in that, the word reaction means what? The reaction means an breaking and making of bonds, means the breaking of bonds and simultaneously there is a making of bonds is a reaction. There are mainly four types of reaction, that is an addition reaction, elimination reaction and substitution reaction. Then and rearrangement reaction. Then addition reaction. Addition reaction means what? The name itself indicates that addition. Addition means to add someone. Then in substrate, addition of two or more molecules or more than two molecules, then there is a formation of a product. It is an addition reaction. Then here is an example, that is an ethene, CH2 double bond CH2 plus Br2. Then it gives an C2H4 Br2, means 1, 2 bromoethane. It is an product of an addition reaction. Then next one is an elimination reaction. The word itself indicates that elimination means elimination of something from the component. It is an elimination reaction. Then here is an example, that is an 1, 2, chloropropane. That is an 1, 2, chloropropane. It is an substrate or it is an reactant. Then from this there is an removal of or elimination of this Cl and this Cl and we get an product, that is an 1-propene plus chlorine. This is an elimination reaction. Then we compare addition and elimination reaction. In addition reaction, there is an substrate which is an unsaturated, means those compound having a double bond or triple bond is an substrate in addition reaction, and those having a double bond or triple bond are the product in an elimination reaction. And the product of addition reaction is an saturated compound and the substrate of the elimination reaction is an saturated compound, means addition reaction is reverse to the elimination reaction or vice versa. Then substitution reaction. Substitution reaction means that when one or more component gets substituted by another is an substitution reaction. Here is an example, that is an CH3Br, that is an methyl bromide. When reacts with NaOH, then it gives an CH3OH plus NaBr. This Br gets substituted by this OH and we get an product, that is an CH3OH plus sodium bromide. This is an substitution reaction. Then fourth one is an rearrangement reaction. In rearrangement reaction, there is an simultaneously bond breaking and bond making is formed in rearrangement reaction. For example, rearrangement reaction, when two ethene molecules when reacts with each other in presence of light or in presence of light or heat, then it gives an cyclobutadiene. It is one of the type of rearrangement reaction. Then rearrangement reactions are so many, like a Smile rearrangement, Neighbor rearrangement, Cope rearrangement, Oxacope, etc. Then the first three reactions, that is an addition, elimination and substitution. These three reactions are mainly classified into two types, that is an electrophilic reaction and nucleophilic reaction. Then means in the reaction there is an addition of electrophile, it is an electrophilic reaction, and in reaction addition of nucleophile, it is an
nucleophilic reaction. Then what is an electrophile and nucleophile? Electro means electrons and philic means lovers. Means electrophiles are an electron lover. Electrophiles are an electron lovers. They are having a positive charge. They are acceptor of electrons. Then nucleophiles. Nucleo means nucleus and phile means lovers. Means nucleophiles are an nucleus lovers, and these having an negative charge, and this donate an electrons. It is an nucleophile. Then while comparing an electrophile and nucleophile, electrophiles are electron lovers, nucleophiles are nucleus lovers. Electrophiles are having a positive charge, nucleophiles having a negative charge. Electrophiles accept the electrons, nucleophiles donate the electrons. Then next one is our main topic, that is a nucleophilic substitution reaction. In this we have know about an reaction means bond breaking and bond breaking. Substitution means one of the substituent get replaced or get substituted by another substituent, that is a substitution. And nucleophilic means there is a substitution of nucleophile by another nucleophile. Means nucleophilic substitution reaction is a type of substitution reaction where nucleophile reacts with substrate and gives a product. These nucleophilic reaction are of mainly two types, SN1 and SN2. SN1 reaction is a first order reaction, or SN1 reaction is a nucleophilic substitution first order reaction. Here is an S means substitution, N means nucleophilic, and 1 means first order reaction. This one indicates that an order of reaction, and SN1 reaction is also known as an unimolecular reaction, that is an uni means 1. Rate of reaction depends only upon an one component. It is an SN1 reaction. Then SN2 reaction. SN2 means S means substitution, N means nucleophilic, and 2 means second order. Means SN2 is an nucleophilic substitution second order reaction. Means the rate of reaction depends upon an two component, that is an substrate as well as reagent. And it is also known as an bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bi means an 2, where is an rate of reaction depends upon an two component. Now let's see SN1 reaction. SN1 reaction. SN1 reaction. In this, this is an carbon having an 4 valency. 4 valencies are satisfied by the groups. These are 3 other substituent, and L is an leaving group. Means in substrate there is an having an leaving group. This leaving group is lived. This leaving group is, ये लिविंग ग्रुप जो क्या करेगा, ये क्या करेगा, कार्बन को छोड़ के चला जाएगा. And this is an slow reaction, and there is an formation of an carbocation. There is an having an positive charge on carbon. Positive charge on carbon. This is an carbocation intermediate. And to this carbocation there is an addition of our nucleophile having an negative charge. This nucleophile adds from carbon from the both sides, from back side as well as from front side, and it gives an product, that is an from back side nucleophile is attached and from front side nucleophile is attached, and we get an 50% possibility of inversion of configuration and 50% possibility of retention of configuration. Then what is an inversion of configuration? Means inversion of configuration, that is an leaving group is on a front side and nucleophile adds from a back side, and these 3 groups are shifted towards the front side. Means an inversion of configuration. The most simple example of inversion of configuration, जो अपनी अम्ब्रेला रहती है ना, अम्ब्रेला का ऐसे डोम शेप रहता है, राइट. देन अगर बहुत तेज हवा चलती है तो जो अम्ब्रेला का ये वाला ऐसा वाला जो डोम शेप है वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. दैट इज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मीन्स
एज पर द लिविंग ग्रुप जो फ्रंट साइड में था वो निकल गया और वहां पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल. देयर इज एन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. Then let's see the actual mechanism of reaction. Now SN1 reaction. In SN1 reaction, this is an substrate. In substrate there is having an leaving group. अब ये leaving group क्या करेगा, slowly निकल जाएगा और फॉर्मेशन क्या होगा, कार्बोकैटायन आयन का. अब फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन का. अब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा मीन्स कार्बन को छोड़ के लिविंग ग्रुप जा रहा है और लिविंग ग्रुप कैसे जा रहा है, स्लोली जा रहा है. सो इट इज एन स्लो स्टेप. अब लिविंग ग्रुप कार्बन को छोड़ के जा रहा है तो ये स्लो रिएक्शन है. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होगा. और रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड है, ओनली ऑन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. दैट इज एन, दिस इज एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन ओनली substrate molecule and there is an formation of an carbocation. Then in next step कैसे होगा, फास्ट होगा. क्यों फास्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कैसे है, ट्राइवेलेंट है. बट कार्बन कभी ट्राइवेलेंट रहता है नहीं. ट्राइवेलेंट कार्बन क्या रहेगा, मोस्ट अनस्टेबल रहेगा. तो वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, स्टेबल होने के लिए जाएगा और फॉर्म क्या करेगा. फिर यहाँ पे क्या अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा. न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे होगा, फ्रॉम बैक साइड एज वेल एज फ्रॉम फ्रंट साइड. एंड देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोडक्ट विथ कंप्लीट 50% ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड विथ कंप्लीट 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. अब ये जो इन्वर्जन है एंड रिटेंशन है मीन्स ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बताएगा. स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एन स्टीरियो केमिस्ट्री. मीन्स यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से आ रहा है, बैक साइड से. और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रंट साइड से. दीज आर एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड दिस इज एन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. अब जस्ट सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए. ओके, सिंपल एग्जाम्पल क्या करते हैं. अब चाय बनाना तो सबको आता है. चाय में क्या क्या लगता है, शक्कर, दूध, पत्ती और फ्लेम चलेगा. फिर क्या होगा, अगर हमने दूध, शक्कर और पत्ती ऐसे ही रख दिया तो चाय बनेगी क्या, नहीं. कैसे बनेगी, फिर उसे अगर हम हीट देंगे तो वो रिएक्शन फास्ट करेगा. अदरवाइज रिएक्शन फास्ट करेगा क्या, नहीं करेगा. पर अब अगर वही जो चाय का मिक्सचर है मीन्स दूध, शक्कर, पत्ती, वो अगर हमने सनलाइट में रखा तो सनलाइट में कैसे होगा, धीरे धीरे प्रोसेस होके चाय बनेगी. मीन्स सनलाइट में मोस्ट ऑफ द टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा. मीन्स वहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, स्लो. अगर वही मैं गैस पे रख दूँ तो रिएक्शन कैसे होगी, फास्ट. मीन्स पहले क्या होना है अपना, स्लो रिएक्शन होगा, फिर होगा फास्ट रिएक्शन. देन और एक एग्जाम्पल बता सकते हैं. अगर जो गन का ट्रिगर है उस पर मैंने सिर्फ हाथ रखा तो गन चलेगी क्या, नहीं चलेगी. उसको मैंने प्रेस करना है गन के ट्रिगर पे, फिर ही उसमें से बुलेट बाहर निकलेगी. ओके, वो बुलेट बाहर निकलने का जो प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा, फास्ट रहेगा. सिर्फ मैंने ऐसे एक्शन करना है, नहीं गन चलानी है, तो वो कैसे रहेगा, जस्ट स्लो रहेगा. देन नेक्स्ट वन इज आना SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन. देन SN2 रिएक्शन में क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है, substrate when reacts with an nucleophile and it gives an product. Means अब in this reaction and it is gives an product with 100% inversion of configuration. Means जो कार्बन को जो सब्स्टिट्यूएंट ज्वाइन हुए वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्लेस चेंज कर दिया फ्रॉम बैक साइड टू front side and it gives an complete inversion of configuration product. And let's see the mechanism of reaction. Means in this nucleophile attack from the back side to the carbon and it is having an nucleophile attack from an back side and it gives an pentavalent carbon and pentavalent carbon are most unstable and this is an transition state. Means in this compound or in this pentavalent carbon energy is higher. As the energy is higher the carbon or as the energy higher the molecule is
highly unstable. So the carbon having to stable itself. Then अब क्या होगा, ये जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल का, डेल्टा नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, हमारे लीविंग ग्रुप पे जाएगा, और लीविंग ग्रुप क्या होगा, डिटैच होगा, and formation of an product. In this, the nucleophile attaches from an back side to the carbon, and we having an product with complete inversion of configuration. And अब सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और लिविंग ग्रुप निकल जा रहा है, मीन्स यहाँ पे एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है, एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो दूसरा रिश्ता क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली टूट रहा है. इट इज एन SN2 रिएक्शन. बट SN1 में क्या होगा, जो पुराना वाला रिश्ता है, जो पुराना वाला रिश्ता है मीन्स जो ये जो लिविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, कंप्लीटली डिटैच होगा. मीन्स पहले पुराना वाला रिश्ता पूरा टूट जाएगा और फिर नया वाला रिश्ता बनेगा. दैट इज एन SN1 रिएक्शन. मीन्स देयर इज एन फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन and then formation of an product by the fully racemic mixture. That is an 50% of inversion of configuration and 50% retention of configuration. And in this we have an complete product into an inversion of configuration. This is all about an SN1 and SN2 reaction. I hope you will understand it better. Thank you.